हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर अभय अग्रवाल, फाउंडर एंड एमडी पाइपर सरेका एडवाइजर्स की। पाइपर सरेका इज अ सेबी रजिस्टर्ड पीएमएस मैनेजर एंड एडवाइजर। मिस्टर अग्रवाल ने डायरेक्टर के तौर पे काम किया है प्राइवेट इक्विटी ग्रुप ऑफ जेपी मॉर्गन, इंडिया में, हांगकांग में और सिंगापुर में। ही हैज इन्वेस्टेड इन कंपनीज इन इंडिया, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चाइना एंड यूएस। अभय इज ऑल्सो एन एंजल इन्वेस्टर एंड उन्होंने मल्टीपल एंजल इन्वेस्टमेंट्स भी करी है। अब एक सेकेंड डिग्री ब्लैक बेल्ट इन जूडो भी है, एक सर्टिफाइड इंटरनेशनल जूडो कोच भी है और ही ट्रेन्स अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। वेलकम मिस्टर अग्रवाल एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you, Geetu ji, for having me on the show. Thank you so much. आपका प्रोफाइल देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बिकॉज यू आर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं, साथ में आप एक एंजल इन्वेस्टर भी है और साथ में जूडो एक्सपर्ट भी है। तो जस्ट शेयर द एक्सपीरियंसेस, हाउ यू एंटर्ड इनटू द मार्केट्स, हाउ यू स्टार्टेड लाइकिंग इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज एंड ऑल। गीतू जी, मेरा बैकग्राउंड जो है, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे academic excellence was more in focus. So my father was an IAS officer, and he was posted in Delhi and then in Mumbai, and his focus always was on educating his three sons. And when I was in Mumbai studying in college, I was at Sydenham College in 1991, 92, in 1991, 92, and that time I was first time introduced to the stock market because Sydenham College is at Churchgate, and then the Bombay Stock Exchange is very close by walking distance. Right. So literally half of my class came from, family of brokers. Okay. And that is the first time I actually saw that, look, this stock market is such an amazing thing that you go there and you trade the whole day and then you come back and, end of the day you have made money. So I was very fascinated. That if you do your research and if you do a good job, then this can be something worthwhile. So I decided to pursue that line of education and did my MBA, started working with Citibank as a fund manager, and then went on to work with JP Morgan, as you said in the introduction. And then I decided that, look, I think in India, the opportunity is humongous, especially in asset management, and it is time to do something on our own. So that is how I set up Piper Serica, and now we manage a PMS for which invests in listed stocks. We have a FPI account based in Mauritius that is called Piper Serica Numero Uno India Fund, and then we also have launched our own angel fund. So across these three properties, we basically want to create wealth for our investors for the long-term basis, and that is what me and my team are endeavoring to do now. मिस्टर अग्रवाल, अगर हम आज के बाजार की बात करें, द करंट सिचुएशन दैट वी आर ऑल इन, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो देखें तो काफी जो उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल रहा है। यू हैव डेवलप्ड मार्केट्स व्हिच आर हाफ इनटू रिसेशन एंड सम आर स्लिपिंग इनटू रिसेशन। वी हैव फेड टाइटनिंग हैपनिंग। इट्स नॉट फेड ओनली, बट देश विदेश के बाजारों के जो सेंट्रल बैंकर्स है वो टाइटनिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन कंसर्न्स। तो ऐसी जो सिचुएशन है उसमें अगर हम अपने देश के बाजार की बात करें तो काफी रेजिलियंट रहे हैं और निफ्टी एक बार फिर 18,000 के स्तर के आसपास कामकाज कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, जो हमारा डीकपलिंग हुआ है विदेशी बाजारों के साथ, ये कुछ समय तक रहेगा और आपको लगता है कि इंडिया कैन रियली अपनी जो आउट परफॉर्मेंस उसने पिछले 2 सालों में दिखाई है in comparison to the other world markets, वो बरकरार रख सकता है? जी गीतू जी, मैं 3 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा इसमें। एक सबसे बड़ा तो ये है कि ये जो डीकपलिंग की हम बात कर रहे हैं आजकल, ये एक्चुअली बहुत ऑलमोस्ट 10 साल के बाद हुआ है कि ये डीकपलिंग हमारे फेवर में हुई है। बिकॉज इफ यू सी इन लास्ट 10 years द इमर्जिंग मार्केट्स हैव अंडर परफॉर्म्ड the developed markets by almost 9% per year. So ये decoupling तो 10 साल से चल रही थी in favor of developed markets, और अब साल भर से ऐसा हुआ है कि अब ये थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है because जो developed market investors हैं, large funds, pension funds, they are also thinking that if the developed market gets into a slowdown and on a valuation basis the emerging markets are looking more interesting. And then in the emerging markets, it is actually India that is standing out for various reasons. The biggest being
the demographic structure, that you have a very young population that has just started consuming, and the corporates have under leveraged balance sheet. किसी की balance sheet पे ज़्यादा debt नहीं है, कोई leverage नहीं है, कोई stretch नहीं है. Quality of earnings जो हम देख रहे हैं इस quarter में भी वो काफी अच्छी है on the whole. जैसे COVID का जितना भी pressure था, अपना RBI के interest rate hike का जितना भी pressure था, consumers और companies ने बहुत अच्छे तरीके से उसे absorb कर लिया है. आप देखें ऑटो में डिमांड अच्छी है, रियल एस्टेट में डिमांड अच्छी है, और जीएसटी कलेक्शंस गवर्नमेंट के अच्छे हैं. तो मैक्रो सिचुएशन ऑन अ रिलेटिव बेसिस इंडिया की बहुत अच्छी है. तो अगर मैं इन 2-3 चीजों को साथ में कंसिडर करूं कि ये डीकपलिंग इंडिया के फेवर में हो रही है बहुत सालों के बाद, दूसरा जो हमारा लोकल इकोनॉमी, लोकल कंजम्पशन है वो अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फॉरेन कैपिटल आ रही है वो रिवर्स होगी जल्दी में. मुझे लगता है कि ये फॉरेन कैपिटल इंडिया में आती रहेगी बिकॉज there is a lot of capital globally that is looking for growth opportunities, and really India is standing out. We are seeing in our funds also investors coming into India who are investing in India for the first time. So they are finding their way, and these are long-term investors with a 10-15 year view. So they are not like hedge funds who will go back very quickly. So I think on the whole, I'm quite positive that these flows will continue. मिस्टर अग्रवाल, अगर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो स्ट्रक्चरली बैंकिंग सेक्टर में बदलाव आया है और वो काफी रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके नतीजों में. आर यू सरप्राइज्ड विद द काइंड ऑफ अर्निंग्स दैट ऑल दीज PSU banks mainly have posted this second quarter? I think, yeah, some surprise is there that the slippages are lower than what we expected. So अगर आपके slippages कम होंगे तो automatically आपका profit बढ़ जाएगा. I mean, that is the natural outcome. But at the same time, ये slippages जो हैं, these are quite, I would say, accounting driven. वो accounting entries ऐसी होती हैं कि आप एक क्वार्टर में आप अवॉइड कर ले, पर फिर आपके नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से आ जाएगा. राइट. आई थिंक PSU बैंक्स का हमको 2-3 क्वार्टर और देखना पड़ेगा कि उनके जो एसेट क्वालिटी है वो सच में स्टेबलाइज हो गई है, और जो नेट इनकम मार्जिन है वो सस्टेन कर रहा है. पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जितना हम बैंक से बात करते हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक जो हमारे पोर्टफोलियो में भी है, वो क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि PSU बैंक्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं. And I think a lot of it is to do with the consolidation that has taken place, where smaller banks have been merged into bigger banks, and the economies of scale is coming in. Finance Ministry का clear direction है banks को to pull up their socks. So I think all that effort is definitely making a difference. And the beaten down valuations इतनी ज़्यादा थी कि that investor interest is also coming back in these stocks. Okay. मिस्टर अग्रवाल, अगर आपकी कंपनी की बात की जाए तो अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना होगा और आप इसको कितना बढ़ाना चाहते हैं? जी, हमारे अभी टोटल एसेट AUM है हमारा करीब 700 करोड़, और हमारा टारगेट है कि हम इसको अगले 2-3 साल में 3000 करोड़ तक लेके जाएंगे. तो और उसके साथ साथ कोई नई फंड्स जो आप प्लान कर रहे हैं लॉन्च करने के लिए? जी, अभी हम प्लान कर रहे हैं, हम एक AIF लॉन्च करेंगे HNI इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि लिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, और उसका फोकस रहेगा, इट विल बी अ मल्टी कैप फंड. तो उसमें 1/3 एलोकेशन स्मॉल कैप्स का, 1/3 लार्ज कैप्स का और 1/3 मिड कैप्स का होगा. तो फोकस रहेगा कि स्टेबिलिटी के साथ हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी दे पाए इन्वेस्टर्स को. तो वो अब हम लॉन्च करेंगे अगले 2 महीने तक. अगर हम आपकी करंट पोर्टफोलियोज की बात करें सर, तो वहाँ पे मिक्स क्या है? व्हाट इज द मिक्स ऑफ लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड द स्मॉल कैप्स? आई थिंक व्हाट आई रेड थ्रू योर प्रोफाइल, आपका मेजर जो फोकस रहा है वो आपका ई-कॉमर्स कंपनीज पे रहा है, डिजिटल कंपनीज पे रहा है. ऐसा क्यों? नहीं, डिजिटल कंपनीज पे हमारा फोकस नहीं था. आई मीन वी आर मोर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन्वेस्टर्स, इफ यू कैन से दैट. अभी हमारा करंट एलोकेशन भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% इज इन कंपनीज दैट आर ईदर इन फाइनेंशियल, ईदर बैंक, जैसे ICICI बैंक है, बजाज फिनसर्व है, हमारी बड़ी होल्डिंग्स लेंडर्स में, और फिर हमारे पास एक बंच ऑफ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कैपिटल मार्केट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैम्स है, CDSL है, और एंजल ब्रोकिंग है. बिकॉज हमारा ये फर्म बिलीफ है एज अ फंड दैट
इंडिया में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ेगा अगले 5 साल और 10 साल में, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर, और वो बढ़ रहा है अभी भी डिजिटल चैनल्स की वजह से। आप देखें 10 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं हमारे कंट्री में। और जो ट्रेडिंग हो रही है, जो नंबर्स में दिख रहा है, काफी उसमें भी उछाल है। तो ऑल दिस विल लीड टू कंपनीज लाइक CDSL, CAMS and Angel benefiting because they are almost in a monopoly situation, to take care of these demand. So एक हमारा कैपिटल मार्केट सर्विस प्रोवाइडर जिसको हम कहते हैं, उसमें काफी फोकस है। And other than that, we are very excited about the consumption driven from smaller towns. हम देख रहे हैं tier 2, tier 3 cities से काफी अच्छा डिमांड है अभी, both for building materials, home improvement, autos. So any company that is catering to this market is of quite interesting to us. And third is companies like Lemon Tree that are benefiting from the whole opening up of the trades. So Geetu ji, this is the kind of portfolio we have. E-commerce we had once, India Mart, that was a small allocation that we have already exited sometime back. Okay. What is your view on the new age companies like, the big companies which came into the market, came out with an IPO, many of them disappointed too. So आपका क्या view बनता है वहाँ पे? Because you are an angel investor, you get into spaces like these. Yeah. So I think the companies that listed but are still loss making, I think they listed only because of the bull market that was happening in the IPO space that time. Otherwise, these companies would have struggled to list. My firm belief is that only when companies are profitable on a sustainable basis, they should be allowed to list so that retail investors can participate in that part. But here what happened is that these companies listed when they should have stayed private and raised money from large private equity funds to fund their losses. And I think we are seeing that right now play out, companies like Policy Bazaar, Paytm, Zomato, Nykaa, they're all struggling and the valuations have taken a big beating because these companies are still not able to articulate a clear path to profitability. And I think that's the reason that mutual funds and retail investors have lost the charm. So I think till the companies are still growing and making losses, they should stay private and take money from private investors. I think they should list, and SEBI had this actually. SEBI had a very stringent requirement for listing, which was 3 years of profitability before, but they made an exception. I don't think that experiment has worked very well. So I wonder how long will it continue. चलिए, आपके जो आपके 100 करोड़ का एंजल फंड आपने लॉन्च किया था, वहां पे आप कैसे कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं? क्या आपने वहां पे अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू करा है? जी बिल्कुल, हमने 2 कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और अभी हम 4 कंपनीज में और इन्वेस्टमेंट्स का कमिटमेंट कर दिया है जो अगले 4 महीने में क्लोज हो जाएंगी। और गीतू जी, यहाँ पे हमको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और फ्रैंकली इतने अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इंडिया में, फाउंडर्स हैं जो अपने काफी कुशी जॉब्स छोड़ के MNCs में दे हैव बिकम फाउंडर्स, एंड दीज फाउंडर्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड्स. मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम smaller cities in Bihar, UP, South India, and they went to very good educational colleges like IITs or IIMs, and then rather than taking up a job, they have all become entrepreneurs. So the quality of founders is very high, I would say. And secondly, the solutions they are also providing are very good because like we have invested in 2 companies. One is called Alt Mobility that is based in Delhi, that provides operating leases for electric 2-wheelers and 3-wheelers. So there is a large demand for 2-wheelers and 3-wheelers in the EV space. And at the same time, not everybody is able to buy these vehicles directly. So this company provides operating leases and is doing very well. It is already raising its next round of funding also now. And then we have invested in a company called CrediWatch in Bangalore that does credit rating for SMEs and MSMEs. छोटी कंपनीज हैं जो बैंक से डायरेक्टली पैसा नहीं ले पाते हैं, तो अब वो इस रेटिंग को लेके वो बैंक से डायरेक्टली लोन ले सकते हैं. और इसके अलावा फिर हम कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं. सारा फोकस है कि हम वी इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू ग्रो द बिजनेस and not in D2C businesses. So this fund will not invest in B2B or B2C or D2C businesses. This will focus only on companies that are using technology, whether it's medical technology or diagnostic or
software or any such thing which makes the customers more productive, you know, the B2B customers more productive. And and I'm very happy to say, Geetuji, that we are, you know, that I'm very bullish about the whole entrepreneurship explosion in the country. And I think that is the future. If we have to go from $3 trillion economy to $10 trillion economy, which we will, I have no doubt, then it will be driven by these young founders. You know, it will not be driven by the large companies that are already large. So we're very happy to be in this space. I think this is a space in angel investing which will do very well for next 10 years, 15 years. पर एक जो नजरिया हम रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है, और आपने जो फंड लॉन्च किया है काफी अच्छा कॉन्सेप्ट, इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट, यू नो, पीपल वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ अ फंड. बट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स और इश्यूज दैट रिटेल इन्वेस्टर्स हैव इज दैट ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है इन कंपनीज में. जो नई कंपनीज आती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, उनका पता नहीं होता कि, एंड बेसिकली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू बेस्ड होता है, सारा प्रॉफिटेबिलिटी थोड़े टाइम के बाद आती है, जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है. तो ऐसे में आप अपने इन्वेस्टर्स को कैसे समझाएंगे? ये देखिए, से एग्जैक्टली इसी रीजन के लिए हमारे जैसे फंड मैनेजर्स की जरूरत है इकोसिस्टम को, क्योंकि हम कैपिटल लेते हैं इन्वेस्टर से और हम देते हैं स्टार्टअप्स को. नाउ Geetuji, what happens is that these founders are not very well trained how to engage with investors. You know, they are first-time founders. They have not been educated that, look, if you're taking money from investors, you have to be transparent. You have to have certain standards of corporate governance, reporting, focus on profitability. And that is where we come in, and we put in those processes and systems, and we make sure they're hiring good accounting firms, that they are putting in the right governance processes. Decision making is wide based. There is a board of directors, there is a board of advisors, so that these companies start behaving like proper companies, not a family run operation. So that is, and so that is why we insist that each company that we invest in gives us a monthly MIS. And on a quarterly basis, we share with all our investors how the portfolio companies are doing. So this is the way that we bring in that transparency in this whole private angel fund investing space. Which sectors that you are bullish on, sir? You spoke about some of the stocks that you have added in your portfolio. बट अगर हम ब्रॉड सेक्टर्स की बात करें तो कंजम्पशन स्टोरी लीड कर रही है, आपके ऑटो सेक्टर इज डूइंग वेल, योर बैंकिंग स्टॉक्स आर डूइंग वेल. एनी ऑफ द सेक्टर्स दैट यू हैव आइडेंटिफाइड जो आपको लगता है कि अभी चाहे वो परफॉर्म नहीं कर रही हो, पर द फ्यूचर बिलोंग्स टू दैट सेट ऑफ कंपनीज और द सेक्टर? Yeah, I think one space that we have been tracking is in the pharma space. As part of the pharma space, which is very large, we are looking at companies that are focused on the custom synthesis, CRO, CDMO, CMO business, which is more of contract manufacturing or contract development, as compared to making generic formulations, generic drugs, and exporting them. So companies like Divi's and Laurus Labs, they have struggled recently, both Divi's and Laurus Lab. In fact, today Divi's announced the results and they were not up to the mark. But I think one of the reasons is that these companies are migrating their business from the generic formulation business, the ARV business, towards contract research and contract manufacturing business. And that shift, while it is happening, is painful for shareholders because they have to give up some of the established business to focus on a new business. पर एडवांटेज ये है कि जो नया बिजनेस है, जो कस्टम सिंथेसिस और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट का, इट इज अ वेरी स्टिकी बिजनेस और उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जेनरिक एक्सपोर्ट्स. वो तो पूरी दुनिया करती है, फिर उसमें आप चाइना से compete कर रहे हैं, आप हर बड़ी छोटी कंट्री से compete कर रहे हैं. तो कस्टम सिंथेसिस का बिजनेस है, इसको लाना भी मुश्किल है और इसके मार्जिन्स भी बहुत अच्छे हैं. तो इसमें हाई एंट्री बैरियर है. तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनीज हैं ये थोड़े साल भर के लिए तकलीफ में रहेंगी, पर एक बार इनका ये बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा तो ये इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिवॉर्ड देंगे.
आपका इस समय आईटी स्पेस पे क्या व्यू है? बिकॉज फ्रॉम द लास्ट couple of months, not couple of months, it's nearly 10 months that IT sector has been underperforming because of जो हम बात करते हैं रिसेशन फेयर्स की, यूरोप इज ऑलरेडी इन रिसेशन, यूएस इज स्लिपिंग इनटू रिसेशन। तो ऐसे में आपके आईटी लगता है कि एक ऐसा सेक्टर है जो अंडर परफॉर्म करता रहा है, अभी भी उससे दूर ही रहना चाहिए, या फिर यू आर फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग ऑन डिप्स? No, I think IT is the future of this country. Frankly, I think this is one space as a country we are very competitive in, which is providing IT services to the whole world. और अभी भी मुझे लगता है ग्रोथ है। आप देखें टीसीएस के नंबर्स, इन्फोसिस के नंबर्स, उन सबके नंबर्स जो हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे। एक दो कंपनीज हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया, पर ऑन द होल आई वुड से द ग्रोथ एंड द कमेंट्री हैज बीन वेरी पॉजिटिव। एट्रिशन ऑलरेडी इतना हाई है, उसको भी ये लोग झेल रहे हैं और उसकी भी सोल्यूशंस निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफी जो प्रेशर आईटी कंपनीज को लेना था वो ऑलरेडी ले चुके हैं। और द गुड थिंग इज दैट द कस्टमर डिमांड ग्लोबली स्टेज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसमें स्लो डाउन नहीं है, बिकॉज यूएस में भी कोई स्लो डाउन नहीं है। यूरोप में, यूके में स्पेशली थोड़ा स्लो डाउन है, तो कंपनी हु आर एक्सपोज टू यूके मार्केट में सफर अ लिटिल। बट इफ आई टेक अ 5-year view, I think this is a golden opportunity to invest in some of these leading IT services names. And the valuations have also corrected almost 30, 40, in some cases 50% from their January peak. So, और इन कंपनीज में अच्छा ये है कि कोई वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं है, अच्छा कैश बनता है, तो इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड्स भी अच्छे मिलते हैं रेगुलरली थ्रू बायबैक्स और डिविडेंड्स और बोनसेस। So I highly recommend that every long-term investor should have at least 10% of their portfolio allocated to large cap IT companies at any point of time. Okay. Let's talk about the commodity market. Commodity markets में उठापटक तो जारी है, जहां हमने एक बार, we were talking about a super cycle in metals that has fizzled out. We saw deep cuts and deep correction in commodity space. अब थोड़ा बहुत और वापस रिकवरी देखने को मिल रही है। As we talk about crude, we talk about bullions, we talk about ferrous and non-ferrous metals. तो आपका क्या लगता है कि आपको लगता है कि मेटल सेक्टर जहां उठापटक अभी भी जारी है, you have some pockets of value somewhere? आई थिंक द कमोडिटी साइकिल, और मैंने जनवरी में भी एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जो कमोडिटी साइकिल है अब ये पीक आउट हो गई है, क्योंकि कोविड के टाइम पे काफी शॉर्टेजेस क्रिएट हुई थी, काफी फैसिलिटीज बंद हो गई थी। काफी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं ग्लोबल लेवल के, ग्लेनकोर जैसे, रियो टिंटो, जिनका भी ये व्यू था कि कोविड में पता नहीं कब तक डिमांड कंप्रेशन रहेगा, तो हम प्रोडक्शन कम कर देते हैं। और एक माइन को बंद करके दूसरा दोबारा स्टार्ट करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। प्लस देयर वर सप्लाई चेन डिसरप्शंस अक्रॉस द बोर्ड, स्पेशली फ्रॉम चाइना, बट आई थिंक दोज हैव गॉट रिजॉल्व्ड वेरी क्विकली ओवर द लास्ट 6 months, and as a result there is ample supply of commodities across the world of any kind. And we saw that in crude especially, that despite Russia being locked out, there is still enough crude that finds its way from various sources into the global markets. So despite a slowdown in global consumption, I think the commodity prices have corrected a lot, which tells you that it's not a scarce, scarcity is not going to drive prices up anymore, at least for next 2-3 years is my view. So the best case for commodity investors is that the prices stay flat, which also I think is doubtful, because there is ample supply of at least the base commodities like copper, aluminum, steel, crude. There is enough. So I don't see how the commodity companies will show the same kind of valuation stock returns that they have shown in the last couple of years. Mr. Agarwal, अगर हम 2 साल में देखें तो there has been a rush of retail investors into equity markets, जो म्यूचुअल फंड में भी आ रहे हैं, जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? Because they are new, they sometimes get caught in a situation where they panic and then they move out of the markets never to return. So आप ऐसे निवेशकों के लिए क्या बोलेंगे? जी, मेरी एडवाइस हमेशा से जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भी हैं, यंग इन्वेस्टर्स भी हैं, उनके लिए हमेशा ये है कि यू हैव टू फर्स्ट फिगर आउट कि आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि अगर आप उसमें क्लियर नहीं है
तो फिर आप कोई प्रोसेस नहीं बना पाएंगे इन्वेस्टमेंट का, फिर आप रिएक्ट करते रहेंगे डेली बेसिस पे इमोशनल स्टेट में कि किसी दिन मार्केट ऊपर है किसी दिन नीचे है, तो उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि मार्केट तो रोज आके या तो डराएगा या खुश करेगा। तो मार्केट को ना देखें आप। अगर एक इन्वेस्टर हैं, so what is the kind of asset allocation that you should have? You should talk to an investment advisor, a financial planner rather, Right. to come up with going along with your age, your financial goals. Somebody should give you a financial plan that tells you, look, invest 30% in equity, 20% in debt, 30% in debt, or sorry, in real estate and some other. So that financial plan you should have with you, and then with a lot of discipline stick to that financial plan. आप उसको छेड़े ना हर 3 महीने 6 महीने में, उसको चलने दें, because if you stay invested in the market across market cycles, that is the only way you create wealth. You know, अगर आप अंदर बाहर होते रहेंगे डेली देख के, तो फिर आप रिटर्न नहीं बना पाएंगे. And once you have decided your equity allocation, then you can decide, okay, so much into a mutual fund, so much directly I can do, and so much through some other source. But whatever you do, spend a lot of time before doing it, and then once you do it, then do not tweak regularly. You know, let it be. थैंक यू मिस्टर अग्रवाल फॉर बीइंग विद अस. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी अप्रिशिएट योर टाइम सर. Thank you, Geetu ji. Very nice to be on your show, and you know, I found your questions very relevant for your practically very relevant for your viewers. So once again, thank you for giving me the opportunity. Always welcome, sir. Thank you so much.